and welcome. This is episode 2 of the year-end NewsX Vikas report. In this episode, we review the Swachh Bharat mission and under it specifically, building toilets in rural and urban area for an open defecation-free India. Yes, it has been an era of the toilet revolution in our country under the aegis of Prime Minister Narendra Modi. Now, from the time when one would watch in embarrassment slum dwellers and those living in the countryside squatting along the railway lines, at the highways and the farm fields, to the transformation India has now seen as an open defecation-free country by 2019. It has taken a Herculean effort on the part of the central government to achieve this milestone. Building toilets in villages and urban areas has benefited women particularly, who up until recently had to resort to unsanitary, unsafe practices, which many a time would involve travelling far in the middle of the night to relieve themselves. Women are no longer afraid of getting infected and their privacy and safety is safeguarded. There has also been a greater awareness that has been created to get rid of the taboo of having toilets inside one's homes. And Prime Minister Narendra Modi had launched the Swachh Bharat mission on 2nd of October 2014. Under the mission, there were all villages, gram panchayats, districts, states and union territories in the country that declared themselves open defecation free by 2nd October 2019. It was the birth anniversary of Mahatma Gandhi, his 150th, by construction of over 100 million toilets, that's 10 crore toilets in rural India. There are as many as 600,000 villages that were made open defecation free. Funds worth 1.3 lakh crores have been allocated to fulfill this Herculean task at hand. My team has got into the interiors of Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and other parts of the country to show you the ground reality. First up is a report from a village in Patna, Pulwari. Take a look. पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराया गया है। अभी हम मौजूद हैं पटना के फुलवारी में, जहां पे कई घरों में जो है शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिससे कि महिलाएं आपको दिखाएंगे कि इन शौचालयों के जरिए जो है अब महिलाओं को जो है पहले जैसी समस्या जो है वो नहीं होती है। पहले जिस तरह से महिलाएं जो है दिन के उजाले में शौच करने के लिए नहीं जा पाती थी, उन्हें रात के अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ता था, जिससे कि ताकि अगर जब रात का अंधेरा हो जाए उस दौरान ही वो अपना शौच कर सकें। और लेकिन इस दौरान जो है कई तरह की बीमारियां और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। कई महिलाएं जो है पेट से संबंधित बीमारियों भी जो है हो जाती थी उन्हें, और कई तरह की और भी बीमारियां जो है महिलाओं में हो जाती थी। लेकिन अब जो है शौचालय का निर्माण कराया गया प्रधानमंत्री द्वारा, और इन तमाम जो शौचालय के निर्माण से महिलाओं की ज़िंदगी कितनी बदली है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हुस्ना बानो। हुस्ना बानो जी, आपको क्या लगता है पहले जब शौचालय नहीं था आपके घर में तो क्या समस्या होती थी आप लोग? बहुत समस्या था, जाते थे अंधेला रात में, कभी गिर जाए, कभी मुँह भरे गिर जाए, कभी सांप है तो मच्छर काट लेता था। कच्चा जमीन है, मच्छर काट ले, डंगो काट ले तो यह बीमारी हो गया, तो वह बीमारी हो गया, तो खुजली हो गया। अब बन गया है तो बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। अपना गाय अपना आए, सुविधा बहुत है। चलते थे घैला लिए में, सिर पर डोल में लिए में, पटसिन गिर गए। अरे आज हम लोग केवल गिरे, अरे बाप कमर में चोट लग गया। उससे बहुत अच्छा है, बोरिंग लगा, सेबुल लगा, पानी खोलते हैं, चुटकी से पानी से पीते हैं, खूब अपना नहाते हैं, फिरते, बहुत आराम है, बहुत आराम। क्या लगता है पहले जैसे कि आप लोग जो है महिलाओं को खास करके शौच के लिए रात का अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, तो कई बीमारियां भी हो जाती थी महिलाओं को पेट से संबंधित, और उसके बाद दिन में आप जा नहीं पाती थी, जा ना पाते थे दिन में के उन्ने मर्दाना हो, उन्ने है लड़कर, तो कैसे बैठे। अब बन गया है तो बढ़िया से आराम से जाते हैं, ना तो मच्छर काट ले, तो सांप के डरे ना जाए, तो बिच्छू के डरे ना जाए, तो देखे कि कोई आदमी आ रहा तो बैठे ना। यही सबका बहुत था। अब बहुत सुविधा हो गया है, बहुत सुविधा, पानी लैटरिन सबका बहुत सुविधा हो गया। घर में भी कल है, बाहर भी कल है, सगरो सुविधा बहुत अच्छा है, ऐसा बात ना है। तो सरकार से खुश है ना? हाँ, एकदम खुश, दम खुश, दम खुश। सरकार दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जुलेखा खातून।
पहले किन तरह की समस्याओं से है ना आप लोग को जो है अवगत होना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता था? मैंने कई तरह समस्या होती थी। बहुत वही रास्ता चल, कच्चा जमीन भी था, पार पे खाना ना, पानी ना था, हुआ तो खेत में तो ओनने जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, धोते धोते तो बुढ़िया हो गए, पानी धोते तो। अब बेटी बहू आराम कर रही है। कितना आप लोग को एक महिला के नाते जो है आप लोग को काफ़ी जो है दिक्कत होती थी पहले जो है दिन के उजालों में नहीं जाते थे नहीं। और सांप भी और रात कई तरह की बीमारियां भी हो जाती थी। बहुत है, सब लाइन बत्ती सब ढिवड़ी लेके निकलते थे, लड़कन को लेके हगाइला मुता है। हाँ, पानी में जा रहा है, नहर था, हम लोग को बहुत बड़का बड़का जानवर भी जा रहा है, डर के मारे लड़कन भाग रहा है, हग मुता में लड़कन रात में धरिए ना निकलता था। अब लेकिन आज कितना अच्छा खैर हाँ। और हम लोग क्या करते थे, ये गबड़ा गुबड़ी खान के घड़े में बैठते थे, ना जाते थे बाहर, गबड़ा गुबड़ी खान के घड़े में शौचालय बना लिया था। हम लोग को शर्म लगता था, हम लोग बाहर ना जाते थे, तो गबड़ा गुबड़ी खान के बाहर घड़े में बना लिया था संडास ऐसा, हम लोग ना जाते थे, घर में बीमारी भी हो जाता था। अब संडास में कितनी महके है। An apt example of the toilet revolution. I'm going to start off this discussion with Archana Mishra. She's a social activist. She's worked very closely with the government of India when it came to the toilet sector and how to bring about this revolution, how to change the mindsets, bring awareness, particularly in the rural areas of the country. Now, this ground report, Archana, has come from a very tiny village in Patna. The name of the village is Pulwari and it is a Muslim dominated area. With this massive transformation and particularly the taboo that people had up until very recently, that building toilets inside the homes was an unclean, unsanitary affair, when the opposite is true. And it has given so much freedom, empowerment to the women who are now safe, secure and free from any illnesses and infections. Archana, if you can hear us. Yes. Give me your experience. You've closely worked with the government of India for the Swachh Bharat Abhiyan and creation of these toilets with 100 million of them. 10 crore that have been built. In last 7 to 8 years, the way village is giving thanksgiving to government of India is Modi ji especially. Either for a Swachh Bharat Yojana, either for a Ujjwala Yojana, these two Yojana make the women such a empowered in village areas. When we talk about Jharkhand, when we talk about Bihar, when we talk about Uttar Pradesh, the way government is closely working with the panchayat, and they are helping women to empower and feel safe in their own home, their own villages. There is no words to say how they can say thanks. Archana, what is your experience been? Have you also been in the interiors of these regions, particularly Jharkhand, Uttar Pradesh, Bihar? What has your experience been on the ground? See, we work closely, and I also come from the village only, where we go to village, and when we are traveling one city to another city and districts, what we faced in our childhood and our young age, we know that pain, and still we can feel that pain where the toilet is not there in few states where the state government is not cooperating, right? So we know because we faced. I know when we suffered in a night, we have to go to toilet and there is no toilet and has there been a transformation in these 7, 8, 9 years? 2014 this Abhiyan was launched. It's 2022 now. There are 100 million, 10 crore of these toilets that have been now built. I am working from in village. We are working from 1998. We know that when we go to village for any survey when the ASA worker was not there, the ASA worker joined, the program came in 2007, right? When we go to village, where we go for a washroom, that is the biggest challenge. How the adolescent,
they suffered a lot in a village because the way the woman was saying of the Bihar कि रात को सांप, सबसे ज्यादा जो मौतें हुआ करती थी वो जानवरों के, बिच्छुओं के या सांपों के काटने से हो जाती थी, एडोलसेंट और औरतों की। केवल टॉयलेट के कारण, केवल टॉयलेट नहीं होने के कारण जब शाम को पूरे दिन उनको टॉयलेट के लिए वेट करना पड़ता था, इधर तो मॉर्निंग इधर व्हेन द सन सेट। Absolutely, Archana, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली ये जो we saw that ground report from Pulwari in Patna, the women just said exactly that you know there would be snakes, there would be these scorpions, and they would get bit. They were scared that they would get dengue because of the mosquito bites. They had to travel in the middle of the night with their sons, with their husbands, accompanying them, because it's scary to be actually traveling into the middle of the fields. But okay, I'll come to you. I have with me my managing editor, Rishabh. We're talking particularly about the situation that was pre-2019 and post-2019 in Pulwari. Now, this is a Muslim-dominated area in the heart of Patna. The transformation is there for everybody to see. These women are happy, there is awareness that has been created, and the taboo that people had of having toilets inside their homes has now been dissipated. You know, this, I got a chance to listen to this elderly lady. You pointed out exactly, you know, this, I mean, when we sit in our studios and we have these political discussions, okay, poll discussions, national agenda discussion, this, that discussion, what's the bottom line, okay? The bottom line is, here is in Pulwari, we are talking about development that is not directed towards communities, caste or creed. Can India get into that zone? Now, this is not a person who's a political worker of any sort. In Pulwari, this is a group of Muslim women who have seen in their houses the toilet being built and their lives are changed, period. So when we are judging the statistics, Megha, you know, we've interviewed the minister just a few days ago and they tell you, you know, these many lack this and that many lack that. It's very difficult to fathom what that actually means. That actually means these people's lives have changed. Now, in a person like you and me, we find it very difficult to understand that if it's raining outside, you can't go to the bathroom. Women have to wait till night to go to the fields. The hygiene issues, forget all the other things. I mean, I've seen it happen in the national capital. But to see the goal when we say open defecation free, that the toilets have been built, that they have water, they're being kept clean, there's a pride in them, and the lives of these people have changed, okay? And this is regardless, this is an example. Across the course of our marathon, we've spoken to several people who happen, some are Hindu, some are Muslim, some are Sikh, okay? And whether their lives have changed, and they all say yes. Now, whether they give credit to one person or the other person, Team India is changing. You're absolutely right. I also have with me Ajay Kumar. He's a senior journalist and he's covered rural affairs. Ajay, the transformation by these ground reports, the first one that we just played out, your experience particularly, I'm going to specifically mention before 2014 and after 2019 with the accomplishment of this goal. See, I would have two different takes on this. One, change in the mindset. Before 2014, these things or these kinds of things were not on the government agenda at all. This was not an issue. It was taken for the granted India will go on like this. That is number one. Number two, change in mindset is that even if it is talked about, the excuse being given is the population of the India. We were told, do not compare India, you know, with China, with Dubai, with, you know, America. They are all developed and very less population. India has its own problem of population. So that change of mindset that someone come and says that this is on the agenda, we are going to achieve it. This is one major shift of the mindset. Absolutely. Now, you're right. Now you're coming right. to the ground realities, let me share an example from same Bihar village, which I happened to cover in my young days as a reporter. Barely from there, 40 minutes, there are a place called Koilwar. There is again Muslim dominated area, Meenapur, Jamalpur, Babura. These are all small villages. So in the time of Puri Thakur, an attempt was made to rehabilitate these poor people and give them houses. You know what happened? They all took the cattle inside the house and is still defecting outside
and sleeping outside because they said the toilet inside the house is unhygienic. So this change of mindset and acceptance, the ground report where the women who accepted it and are now thanking the Modi government. Yeah. Yeah, So because that's a difficult task, good, actually changing the mindsets of the people who have been since time immemorial being taught generation after generation that having a toilet inside the house is unsanitary, is unclean. But Dr. Sudhir Krishna is the former Secretary, Urban Development, Government of India, is currently also the chairperson of the BIS Committee on Smart Cities. We speak about urban development, we speak about toilets, and we're talking about these big projects, big achievements the government goes about lauding itself for, whether it is about roads, whether it is about digital payments, whether it is about, providing food grains to the people, food on their plates, especially during COVID. But when it comes to hygiene, when it comes to cleanliness, that's one of the most primary requirements, fundamental requirements, the right to health for the people. And therefore, the toilet revolution is primary in the agendas that the Prime Minister had brought forth as soon as he came to power in 2014. Absolutely. I think this is a very important issue for the society and growth of the society, and for women and even for men also. I think hygienic toilet facility is very, very important, and the efforts made by the government are really highly appreciable. And the role played by non-government organizations as well as by the local bodies like municipalities and panchayats all deserve to be appreciated, and not to leave out the state governments. Most state governments have shown excellent results. I should say that upon, I have been reading in paper, and there are some reports that some states are slightly lagging behind, slightly, not much, there's overall improvement, and where the literacy levels are lower. And I think that's one, and connectivity issue is also there in many cases. You build the toilet, but after all, the fecal matter has to be, disposed of somewhere. Everywhere it is not possible to have septic tank. But good research is going on. Biodigester facilities are also there, where in situ hygienic, recycling of the fecal material is very much possible. So I think a lot of revolution is taking place side by side, along with the awareness, literacy level improvement, and technology. Participation of the non-government organizations and local governments all put together are giving excellent results, and they all deserve high compliments. Absolutely. Tyra, I'm going to come to you, and we were talking about the empowerment that women have gotten, particularly in the rural region. That's transformational. It's a good scheme, and people have got benefited out of it, no doubt, has created the awareness among the illiterate people in the remote village areas. But still, I will say that the report, that the survey that had brought out by the agencies in 2020, that showed that the schools don't have, especially where the girls are studying, they don't have functional toilets. That's why the dropout rates are in teenage girls are still high. Right. So I think that they should be functioning. They're running out of water, or they are semi-constructed, sort of not used like that. So I think these reports should also come, and the government should focus on these very important, I think, issues also. Because we want the girls to go to school. Shauchalaya Abhiyan Mission 2 is already rolled out. Now, this is exactly the reason this has been rolled out, that there has to be maintenance, there has to be checking, reviews that need to be taking place, monitoring of these toilets, whether in schools, whether in rural areas, whether in urban areas. And Subhajit Sahu, he's the SVP Social Safeguard Cube Advisors. And Shibashish, what is the next step that the government needs to take? The ODF 2 plan, Open Defecation Free India 0.2. How do we take this forward? Exactly, this toilet revolution done by Government of India since 2024. I personally call it as preventive healthcare, because as you know,
that all our scientific research has told us that health and hygiene are the two things. Safe drinking water, safe toilets can prevent so many diseases among our rural population. And so this particular revolution of Swachh Bharat mission started by Government of India is a fantastic step. And secondly, the Taira, I heard that government schools do not have functional toilets for girls. Since I represent Cube Highways and I lead social initiative department of Cube Highways, whenever we go and visit government schools to find out gaps, most of the schools they have non-functional toilets for girls. Boys can go anywhere. So girls they avoid going to the toilets. And mostly adult girls they do not come to school during their period because they do not have place to change the pads. Yeah. So under Cube Highways, social initiative wherever we construct toilet blocks for girls, I add two more things. One is sanitary napkin vending machine for girls. Second is incinerator machine for girls. These are two things we also add on to the toilets we construct for anywhere for women. Whenever it's a general toilet block, it's a different matter. Women specific toilet blocks, girls specific toilet blocks. And there has been propagation awareness being created on that front as well. There have been mass media that has been utilized to create that awareness, usage of sanitary pads, women empowerment, particularly having toilets that are dedicated to women, that are separate from the men because of the kind of perceptions that villages have about having separate toilets for women and separate toilets for men. That's important. And schools and colleges is something that should be tapped, that is being tapped, but more needs to be done. All right. On that note, I'll also bring forth the second case study. This is from Baba Nagar. This is a small village in Bhopal where the toilets in question were built in 2018. How has this case study brought about bringing a change in the lives of women? Let's take a look. केंद्र सरकार के पूरे देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत भोपाल में भी हजारों की संख्या में घर घर शौचालय बने हैं। इस वक्त हम आए हैं भोपाल के बाबा नगर में और देखिए यहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं। हालांकि इससे पहले इस पूरी कॉलोनी की अगर बात करें बाबा नगर झुग्गी बस्ती की, तो यहाँ शौचालय नहीं थे, महिलाओं को बाहर जाना होता था। लेकिन अब हर घर में एक शौचालय बनाया गया है। हालांकि कई साल पहले ये शौचालय बने, लेकिन शौचालय बनने का जो काम है वो नई बस्तियों में अभी भी लगातार जारी है। शौचालय जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है, ये कोई महिलाओं से पूछे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्क महिलाओं को ही पड़ता है। जो शौचालय बने हैं उसके बाद क्या कुछ उनको दिक्कतें उनकी दूर हुई हैं और क्या बदलाव उनकी ज़िंदगी में आया है, ये जानेंगे हम। कुछ महिलाएं भी हैं जिनके घर में शौचालय है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? सरोज अहरवाल। सरोज जी बताइए, कब आपके घर में शौचालय बना और किस तरह बना है? 4 साल बाद पहले बना था, नगर निगम की तरफ से, जो सर गवर्नमेंट ने बनवाया उनकी तरफ से था। इससे पहले आपके घर में शौचालय था? नहीं था, बाहर जाते थे जंगल में, डर लगता था बहुत जाने में। अगर अब लड़कियां थी हमारी तो हमें उनके साथ में जाने पड़ता था। तो अब ये सुविधा है कि लड़कियों का ना जाना समय भी बच रहा है और लड़कियों की सुरक्षा भी है शौचालय। सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल महिलाओं की सुरक्षा का ही रहता है। आप बताइए, आपको क्या परिवर्तन आया शौचालय बनने के बाद और पहले? ये आया कि हम रात बेरात से बच गए हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे, मतलब हमको सेफ्टी है उससे। बाहर जाते थे रात बेरात तो हमको डर लगता था, और हमारे यहाँ बच्चे हैं तो फिर वो भी जाने में डरते थे, तो वो नगर निगम द्वारा वो खुद बना के गए हैंगे। ये आप क्या कहेंगी, आपके घर में है शौचालय? तो ये बताइए, ऐसा तो नहीं कि शौचालय बन गया लेकिन फिर भी बाहर जा रहे हैं लोग आपके? नहीं नहीं, कोई नहीं जा रहा बाहर, कोई नहीं बाहर। पहले सब जा रहे थे, पूरे मोहल्ले के जाते थे, अभी कोई नहीं जा रहा, सब शौचालय में जाते। तो ये बताइए, पहले बीमार भी होते होंगे लोग, क्योंकि गंदगी होती थी बाहर, उससे बीमारियां भी बढ़ती थी, उसमें भी अंतर आया था क्या? आया ना अंतर। सुविधा है हमको उससे, मतलब ये है कि गंदगी ना हो रही है और ज़्यादा परेशानी दिक्कतें नहीं आ रही है। ये है कि बस अब हमको एक छोटी सी लाइन चेम्बर की चाहिए गली के अंदर, जो वो पाइप लाइन थी वो बंद करा के चेम्बर वाली लाइन डलवा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है।
स्वच्छता से बदलाव की पहल में अब विकास हो रहा है, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो तस्वीर पहले कुछ अलग थी। देखिए, बाबा नगर झुग्गी बस्ती है और यहीं पर लोग रहते हैं। अब हर घर में अमूमन शौचालय बन चुका है, लेकिन अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें तो यहाँ देखिए झुग्गी से लगा हुआ ही एक खुला मैदान था, खुली जगह है। यहाँ पर लोग शौचालय करने आते थे और यहाँ पर मैदान में जो महिलाएं हैं अमूमन ख़ासतौर से अंधेरे के वक्त उनको आना होता था और शौचालय यहीं करती थी वो। तो इससे ये होता था कि गंदगी फैलती थी, जो मल था वो एक तो पानी के ज़रिए यहाँ से बहकर आगे जाता था और दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो मच्छर मक्खी या दूसरे दूषित जीव जंतु पनपते थे जो पास ही लगी हुई कॉलोनी में जाकर लोगों को बीमार बनाते थे। तो इससे स्वच्छता तो हुई ही है, लेकिन लोगों की जो हेल्थ है, कह सकते हैं कि अब लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं और यही वजह है कि स्वच्छता से ऐसा परिवर्तन अमूमन हर शहर में आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज़, भोपाल। All right, so that was in Bhopal, Madhya Pradesh. Let's take a look at the third case study. This is from Karna village in Gonda district of Uttar Pradesh. The toilets in this locality were built in 2019. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें कि हर घर शौचालय, यानी कि गरीबों को और माताओं बहनों को उनको शौचालय भेंट करने के तौर पर उनकी एक योजना आई, जिसको लेकर के अगर धरातल पर स्थिति देखी जाए तो करनैलगंज के हम एक ग्रामीण क्षेत्र में गांव में हैं, जहां पर इस परिवार में 22 सदस्य हैं और इन 22 सदस्यों में जो है बड़ी संख्या महिलाओं की हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ, पीछे आपको दिखाना चाहूँ तो मैं कैमरामैन से कहूँगा चलकर दिखाए कि यहाँ पर शौचालय मिला है। इस परिवार में 22 सदस्य हैं और 2 शौचालय हैं जो इनको मिला हुआ है। तो ऐसे में एक एक करके आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ भी एक दूसरा शौचालय बना हुआ है जिसको मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर बना हुआ है। और इस तरह से अगर बात की जाए तो लोगों को इससे सीधे तौर पे इस परिवार के सदस्यों को बेहद ही लाभ है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस परिवार में महिलाएं हैं जिनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और अब ये स्थिति है कि ऐसे में जब शौचालय इन्हें मिला है तो इससे इन लोगों को तमाम जो समस्याएं आती थी, सड़क के उस पार इनको जाना पड़ता था, दूर दराज इलाकों में खाली स्थान देख करके, खेतों में जहां पर इनको सांप बिच्छी का भी डर होता था, और जब बरसात होती थी चहले में जो है गंदगी में पानी में जाकर के इनको दिक्कत करना सामना पड़ता था। उन सारी समस्याओं से इन्हें अब जो है निजात मिली है। इस वक्त हम गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में है, गोशीपुरवा गांव है, जहां पर माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना थी कि शौचालय निर्माण का काम, उसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं को किस तरह से उससे निजात मिला है, शौचालय अगर मिला है तो लोग महिलाओं को क्या लाभ हुआ है, माता जी से ही डायरेक्ट बात करते हैं। माता जी ये बताइए, आपके यहाँ शौचालय बना हुआ है, 2 शौचालय मैं देख रहा हूँ, क्या लाभ है इसका? बढ़िया लाभ है। अस लाभ है कि मैं टट्टी मैदान हमसे रात बिरात उठी जाइत रहे मैदान के चहला पानी में जाई तो चाहे मुख्य थी तो हमको दिक्कत नहीं है। Look at the third case study. This is from Karna village in Gonda district of Uttar Pradesh. The toilets in this locality were built in 2019. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें कि हर घर शौचालय, यानी कि गरीबों को और माताओं बहनों को उनको शौचालय भेंट करने के तौर पर उनकी एक योजना आई, जिसको लेकर के अगर धरातल पर स्थिति देखी जाए तो करनैलगंज के हम एक ग्रामीण क्षेत्र में गांव में हैं, जहां पर इस परिवार में 22 सदस्य हैं और इन 22 सदस्यों में जो है बड़ी संख्या महिलाओं की हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ, पीछे आपको दिखाना चाहूँ तो मैं कैमरामैन से कहूँगा चलकर दिखाए कि यहाँ पर शौचालय मिला है। इस परिवार में 22 सदस्य हैं और 2 शौचालय हैं जो इनको मिला हुआ है। तो ऐसे में एक एक करके आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ भी एक दूसरा शौचालय बना हुआ है जिसको मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर बना हुआ है। और इस तरह से अगर बात की जाए तो लोगों को इससे सीधे तौर पे इस परिवार के सदस्यों को बेहद ही लाभ है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस परिवार में महिलाएं हैं जिनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और अब ये स्थिति है कि ऐसे में जब शौचालय इन्हें मिला है तो इससे इन लोगों को तमाम जो समस्याएं आती थी, सड़क के उस पार इनको जाना पड़ता था, दूर दराज इलाकों में खाली स्थान देख करके, खेतों में जहां पर इनको सांप बिच्छी का भी डर होता था, और जब बरसात होती थी चहले में जो है गंदगी में पानी में जाकर के इनको दिक्कत करना सामना पड़ता था। उन सारी समस्याओं से इन्हें अब जो है निजात मिली है। इस वक्त हम गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में है, गोशीपुरवा गांव है, जहां पर माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना थी कि शौचालय निर्माण का काम, उसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं को किस तरह से उससे निजात मिला है, शौचालय अगर मिला है
तो लोग महिलाओं को क्या लाभ हुआ है, माता जी से ही डायरेक्ट बात करते हैं। माता जी ये बताइए, आपके यहाँ शौचालय बना हुआ है, 2 शौचालय मैं देख रहा हूँ, क्या लाभ है इसका? बढ़िया लाभ है। असल लाभ है कि टट्टी मैदान हमसे रात बिरात उठी जाइत रहे मैदान के चहला पानी में जाई तो चाहे नीचे मुठी थी तो हमका सबका दिक्कत नहीं है, आराम है हमको सबका। और चाहे नीचे मुठ पड़ी। पहले क्या दिक्कत आती थी माता जी? पहले दिक्कत आत रहे कि लेकिन जाइत रहा देर सवेर रात बिरात जहाँ जहाँ जाग पड़ता रहा तो कोई साथी होत रहा तो नहीं होत रहा है, अकेले जाग पड़ता है तो उसका हमका सबका लाभ मिला है। लैट्रिन मिली तब लैट्रिन में अपने देर सवेर जो है कि मंगने पर जा सके थे, कोई को रोक टोक नहीं है काम से, हमका सबका लाभ मिला है तो लाभ मिला है। आप घर की बहू हैं तो आपको क्या लगता है कि इस योजना से जो हर घर शौचालय की बात है वो कितना कारगर साबित हो रही है? बहुत अच्छी साबित हो रही है क्योंकि घर के बहू को बाहर जाना पड़ता है, जिन लोगों से पर्दा करना पड़ता है उन्हीं लोगों के सामने हमें जाना पड़ता है तो थोड़ी शर्मिंदा महसूस होती है, तो उस समय बहुत काफी लाभ हुआ। आप जैसे जाया करती थी पहले तो उस दिक्कत में ऐसी कौन सी समस्या जो लगती थी आपको बहुत कचोटता था? एक तो चला पानी में जाने की दिक्कत, ऊपर से बाई चांस दिन में या सवेरे में जाना तो कोई देख ना ले उसकी शर्म की दिक्कत, यही सब परेशानी होती थी। कीड़े मकोड़े बारिश के मौसम में किच किच में जाना, सांप बिच्छी का डर होता करता। अच्छा, और भी हैं, आप ये भी आपकी बहू हैं जी, ये बताइए क्या समस्या और अभी जो बन गया है शौचालय आपके घर में तो कितना उसका कैसे लाभ? अब तो बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा। पहले तो बहुत परेशानी थी, रोड के उस पार हम लोग जाते थे, कीड़े मकोड़े का डर था, गाड़ी आती उसकी लाइट में भी हम लोग शर्मा जाते थे। अब ये सब परेशानी अच्छी है इस समय। आप भी घर के सदस्य हैं, आप बताइए, बच्चे भी हैं और काम भी होता था आप लोग को, तो काम के बीच में ही जाना पड़ता था शौचालय से? हाँ, तो दिक्कत होती थी, सुबह शाम जाओ लैट्रिन बाथरूम के लिए पानी टहला होता था, सब वही में बहुत दिक्कत होती थी, कीड़ा मकोड़ा सब लोग काकर यही सबकी दिक्कत होती थी। अब क्या लगता है कि जो ये योजना है उससे लाभ हो रहा है? लैट्रिन मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हमें सबका लोग का, हमें तो लैट्रिन नहीं मिलती है। अच्छा, आपको मतलब कि आपके घर में 4 सदस्य हैं? हाँ, 4 सदस्य हैं, हमें सब लोग का लैट्रिन। अच्छा, 2 शौचालय बना हुआ है? हाँ, हमें सासू माता मिली थी, हमें सब लोग का नहीं मिली। It's truly a revolution. We saw 2 places, Rishabh. One, a Basti, which is in Bhopal. It's an urban area, but the slum dwellers and particularly the women have faced this problem, had been facing this problem. And the second one is a small tiny village in Gonda in Uttar Pradesh. The problems the women have faced have been the same. You know, very, very interesting, you know, putting these reports together, okay, with our reporters who've gone to the field. What have we seen here, okay? And this is a holistic approach. Let me just recap for you. So what we have actually witnessed here, our reporters who've gone out in the fields have not found non-functioning toilets. That doesn't mean there aren't any non-functioning toilets. As your guests have been pointing out, not everywhere is it, can you put a septic tank? Running water becomes a primary problem after you build the toilet. But what's happening here on the ground? Number one, the toilets that are being built and the monies that is given to the woman of the house. Okay, now you've just seen this in Gonda. You can clearly see a very traditional, some modern people would say regressive household. The daughter-in-law, bahus are all in parda. Okay, for them it is the first empowerment of women, where the money, the 10,000-12,000 rupees or the toilet construction is being done in the name of the woman of the house. Number two, that some thought has been put into it. So the bathing area and the toilet area are kept separate. There's a wall in between. So there's some thought has been put into it. They are kept outside the house, as in not inside one of the rooms, outside the house for health and safety reasons. And you're seeing here in this case studies that come from Gonda, this is a very large family with a lot of women. And what are they saying? Things unimaginable. How do you go to the toilet if it's raining? Means you're getting drenched. Women would actually have to hold it in, because they only go to the toilet at night. Then if there's a car driving past, you could fall down, hurt yourself, injure yourself, safety issue, regardless of states. One is UP, one is Madhya Pradesh, one is Bihar. Things that we would not consider problems in urban areas, that what about scorpions and snakes, which is a very real thing in fields, which is a problem. So from health and safety, from women's empowerment to some thought
that you can't be having a shower on top of your commode. A lot of thought has been put into it. So there is some semblance of hope that at least we're getting our ducks in a row and getting a prospect right. And the most heartening thing which you'll please see in the Ghaziabad report, which is coming up next, that on the toilet, the name of the woman is written in for whom the toilet was built. You're absolutely right. Archana, the first step, पहला step, अगर women को empower करेंगे, women के नाम पर हम एक toilet में पैसे उनको देंगे, within the family there is going to be a consensus, there is going to be regard that is going to be given to the woman for the first time around. That's absolutely true. And you know, that kind of confidence, if male is saying that I don't want to construct toilet in my house because of that village and your house, that no, we don't want to. But here is the empowerment, here is the power of the woman who will decide where I have to make the toilet in my home and how to use it, how to take care of the toilet. As gentleman said, that is the water leaking is the issue, and when the safety tanks is going to be filled, what is the next step to do? All the training, when the woman is getting the training from the panchayat, and how the use of the safety tank when is going to fill as a खाद, जो देसी भाषा में कहते हैं कि उसका खाद का उपयोग भी, उस खाद को बेच के भी जो इनकम महिलाओं को मिल रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज जिन गांव में हम लोग पहले जाया करते थे जहां टॉयलेट की इशू होती थी, जहां पे आपको जो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ करता था, उसमें कितने परसेंटेज गिरावट आई है. बच्चों को जो लूज मोशन की जो इशू होती थी, डायरिया की इशू होती थी, हर घर में ये इशू होता था, उसमें इतनी गिरावट आई है. उसका कोई जो कि स्वास्थ्य से है, शौचालय एक आपको एक आइडेंटिटी है कि शौचालय बनवाया है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चीजों में सुधार आया है, ये केवल वो महिला जानती है जिसके घर में ये टॉयलेट है. Absolutely. और उस घर की किशोरी जानती है, और उसके घर में आने वाली जो महिला मेहमान है वो जानती है कि इस टॉयलेट का कितना उपयोग है. अर्चना जी, आप बहुत सही बात कर रही हैं. बहुत पहली सीढ़ी है, पहली इकाई है. Absolutely, you're absolutely right. Tahira, I'm going to take on this point. You know, when we talk about, as Rishabh was pointing, we throw out the facts and figures, statistics. 100 million toilets have been made. There has been lakhs of crores of rupees that have been spent. These are just numbers for us. Somebody like you and I who live in these apartments and homes, it's just a matter which is taken for granted. I could not just fathom the problems that the women who have spoken on this telecast, where the ground reports have been taken, whether it is in Uttar Pradesh, whether it is the Basti in Madhya Pradesh, or for that matter in Bihar and in Ghaziabad and across the rest of the country. Not India, not in only. Everywhere. Yes, absolutely. Across, whether it is in Mumbai, Kandivali, these slum areas, whether you talk about in south of the country, Tamil Nadu, Kerala. Yes. India is a very good impact, not only in the North India. When we go and see in South India also, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu के जो poor districts है, आप वहाँ पे जाके देखिए, it's such a great impact, nobody can imagine. I absolutely agree with you, and the proof is in the eating of the pudding, and that's why the ground reports, the case studies have been done. It's transformational. It's really a revolution. Tahira, I'm going to come to you. Yes, the first step towards women empowerment is about the safety and health of the women. It's a question. Yes, it was a question of not only health hygiene, but the dignity of women also. They used to go out in night in the fields and all, and lots of the problem of safety, security, hygiene and dignity was there connected with this. So it's good that they have got benefited, but I am saying that I also work with the slum areas. I have worked all my life I have been fighting for the women's right for last 25 years. So I know, I worked in slum areas, I worked in remote areas, villages also. Still, the picture is not as rosy and glorified as you are showing. Yes, improvements are there, we should welcome. It's a very good scheme that has benefited our women, but more effort has to be put into it. That running out of waters in schools, yes, I'm talking, when teenager girls are going. It's a work in progress.
It's a work in Yes, progress. we should Like work I said, together phase to 2 has improve the already been things. rolled out, and therefore review monitoring has to be done. Without Yes, of maintenance, it's going to fall flat. Dr. Sudhir Krishna, my question being, if you're not able to even provide your women with the basics of health and safety and hygiene, what will you go about giving them, talking about tall claims of providing education, asking them to go out and earn for themselves, which is again then providing them with empowerment? Well, you have answered the question also, but I would only say that it works both ways. Education also improves the desire to have access to toilets or any other health facilities. So we must focus on basics also. We must focus on, and government is doing that. I'm not saying that work is not going on, but we should see that people should have awareness about health requirements for health facilities, in which toilet is a very important thing. So therefore we must focus on education, basic education, and middle level education, particularly for the females, which is very low in many states still. Adult education, primary education, so that is Agreed. But then, when your schools don't have toilets, the children, the women, the girls particularly are not going to be enrolled because like I said, these troubles that they have been facing, the case studies, the women themselves have said, they have their daughters-in-law, they're married early on. So many of these problems that are systemic, they have to be removed. But if awareness is not created within the family, that there has to be hygiene, there has to be women that need to be provided with these basics, the fundamentals that they require. They are not supposed to go out, otherwise they get inflicted with all the illnesses and infections. If that is not done within the home, within the four walls of your house, in which way can you go about giving education? That's the second, I'll say that's the secondary step. Absolutely, you are right, and we should focus on that. That's why I said that toilets are a must. At the same time, focus on other aspects also. As I said, that education, literacy, and all that is also important. And at the same time, it should be like, we should have a village level plan. The panchayat and municipality must take pride. Today, government of India is taking pride in having defecation free India, all right. But every panchayat should feel proud that they have the, no open defecation, all toilets are working. That kind of challenge has to be taken by local bodies, local government. And then only it will become sustainable. Absolutely. Because sustainability is also a very big issue. Building toilet is one part. You can commission it also to begin with, but maintaining it, etc., for poor people particularly, it's another challenge in itself. Okay, all right. I'm going to quickly put out for my viewers the fourth case study. This is from the National Capital Region. My colleague Jatin Goswami takes us through this scheme of building toilets that has helped people of Kadrabad in Ghaziabad. Take a look. हम मौजूद हैं और होता क्या था, एक वक्त था जब लोगों को शौच के लिए घरों से काफी दूर जाना पड़ता था। यहाँ महिलाएं भी आपको नजर आएंगी। सबसे ज्यादा परेशानी किसके लिए थी? महिलाओं के लिए थी। और आपने एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें भी ये तमाम जो व्यथा है महिलाओं की वो देखी थी और किस तरह की परेशानी आती थी उससे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जहां सोच वहां शौचालय बनाया गया। सोच क्या थी? एक सपना था जिसे साकार करना था कि जो लोग हैं वो खुले में शौच जाने के लिए मजबूर ना हो। तो उस सोच पर काम किया गया और फिर करोड़ों लोगों तक शौचालय पहुंचाया गया। कैसे पहुंचाया गया? उनको आर्थिक मदद दी गई ताकि वो अपने घर में ही शौचालय बनवा पाएं। नतीजा आज हम सबके सामने है, करोड़ों शौचालय बन गए। ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे थे जगह, ये वही है शौचालय और इस पर बाकायदा लिखा भी हुआ है कि ये कब बना और कितनी धनराशि जो है वो आर्थिक सहायता के रूप में दी गई। यहाँ देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ निर्मित शौचालय, लाभार्थी का नाम लिखा है, उनके पिता का नाम लिखा है और अनुदान राशि ये सरकार ने दी। ग्राम कादराबाद, भोजपुर, गाजियाबाद जो मोदी नगर के अंतर्गत आता है। पहले होता क्या था वो भी जानेंगे और किस तरह की मुश्किल आती थी वो सीधे लोगों से पूछेंगे। महिलाएं खासकर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनके परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद हैं।
कितनी मुश्किल आती थी बाहर जाने में? सुबह सुबह ठंड भी है और सुरक्षा को लेकर भी कई बार होता है कि भाई दूर जाना है घर से। हाँ ऐसी है, दुख भी हो गया और वे जाडा भी पहाड़ पे जावे बाहर ही। जी हाँ किसको धन्यवाद करेंगे घर में शौचालय जो बना? बढ़िया, जो को बनाओगा उसको धन्यवाद है भैया। जी हाँ मोदी जी ने सोचा था, ये सपना देखा था, फिर घर तक शौचालय को पहुंचाया गया, बनाया गया। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी ने बनाया भाई, ये तो मुझे पता ना किन्ने बनाया भैया जी। हाँ पर बड़ी बन गया तो बन ही गया। जी क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका और कब आपके घर में बना? माता जी हालांकि बता रही हैं कि ज्यादा उनको नहीं पता, लेकिन कब बना थोड़ा आप बताइए। सर मेरा नाम विक्की कुमार है और ये 17-18 में बना था, 2017-18 में जी। और ये प्रधानमंत्री उसके में बना था, ये मोदी जी के राज में। जी जी इससे काफी बेनिफिट है ज्यादातर बच्चों को, महिलाओं को, लेडीजों के लिए, सभी के लिए बेनिफिट है इससे सर। कितनी मुश्किल आती थी उससे पहले? उससे पहले काफी मुश्किलें आती थी, सुबह के टाइम में जाना, रात में जाना, बरसात में जाना जी। उसको टाइम देख के जाना पड़ता था क्योंकि खुले में शौच करना, जी जी, काफी बीमारियां वगैरह भी होती थी इस चीज से। किसका धन्यवाद करेंगे आप इसके लिए? सर इस चीज के लिए तो हम अपने पहले तो लट्टू प्रधान जी का धन्यवाद करेंगे, उनके थ्रू हमारे गांव में बना। फिर हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी के थ्रू जो हमारा बना है ये, जी जी, मोदी जी ने बनवाया है सबको। जी जी। तो आपको लगता है कि इससे स्वच्छता जो है उसमें भी इजाफा हुआ है? क्योंकि जहां तहां अगर शौच करते हैं लोग तो एक गंदगी भी होती है उससे, और फिर वो गंदगी भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक असर छोड़ती है। हाँ जी सर जी। इससे काफी साफ सुथरा रहता है सर जी। गंदगी वगैरह सब हट गई है इस चीज से जी। कोई खुले में शौच नहीं है, कोई बीमारी नहीं फैलेगी। महिलाएं बाहर शौच के लिए नहीं जाती हैं। जी जी। हाँ जी, तो अभी ये शौचालय घर में बन चुका है तो बाहर की कोई जरूरत नहीं है और सफाई भी रहती है। जो बाहर जाते थे उससे गंदगी फैलती थी। अब हर घर में शौचालय है। जैसे ही हम गांव में आए हमने दिखाया आपको कि एंट्रेंस पॉइंट था और अंदर हम आए तो यहाँ पर शौचालय है। लेकिन आप यकीन मानिए ये जो शौचालय है वो सरकार ने बनवा कर दिया है, उसके लिए बकायदा धनराशि दी गई थी। और आप देखिए यहाँ पर लिखा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित स्वच्छ शौचालय, लाभार्थी का नाम लिखा हुआ है। अनुदान राशि 12,000 रुपए इनको मिली। ग्राम कादराबाद, भोजपुर, गाजियाबाद, जो कि मोदी नगर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर परिवार वालों से बात कर लेते हैं। महिला सबसे पहले हैं हमारे साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी किसको थी? महिलाओं को। पहले भी हमने महिलाओं से बात की और बात कर लेते हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ये बताइए कि जब आपके घर में शौचालय नहीं था तो किस तरह की परेशानी आती थी? बहुत परेशानी आती थी, बाहर जाना पड़ता था खुले में। मोदी जी ने बनवाए तो अब सब ठीक है जी। कितना समय हुआ बने हुए? करीबन 3 साल जी। तो 3 साल में कोई बदलाव आया जिंदगी में, सकारात्मक बदलाव? पहले बहुत मुश्किल आती थी, अब समाधान हो गया उसका? पहले बहुत मुश्किल आती थी, अब नहीं आती। All right, so there you have it. And my final case study, this is from Kandivali area of Mumbai, one of the slum dwellings. My colleague Sujata takes you through this ground report. The Swachh Bharat Mission campaign, which was started with the intention of every person being healthy and cleanliness should be followed, was the ambition. And now we see that the Har Ghar Shauchalay campaign has reached every corner of the nation, where right from a personal toilet for a home to a public toilet under the Swachh Bharat Mission has been made available for the people, especially in the rural areas and in the slums. Currently I am here in this slum area in Kandivali, where a huge crowd of population lives, and we see that because of this toilet that has been constructed here, people have now been access to this since the last few years, because of where earlier they used to travel to long distance, and a long distance was to be travelled to cover and also to use and get access to the washroom. We have got some of the females with us here. Let us talk to them and try to find out क्या बोलेंगी ये जब से यहाँ पे शौचालय शुरू हुआ है तब से क्या कुछ आपको चीज़ें बेहतर लगी हैं और किस तरीके से जो है आपके लिए महिलाओं के लिए चीज़ें बेहतर हो गई? बिकॉज शौचालय है यहाँ पर। ये शौचालय है, साफ़ सफाई को लेके हो गई है, मतलब बहुत से ज़्यादा गंदगी नहीं था तो कचरा ये वो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था हर किसी महिलाओं को, बच्चों को। लेकिन जब से ये करे हैं तब से इतनी है कि कोई चीज़ों से, बहुत सी चीज़ों से मतलब महिलाओं को, बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है। गंदगी से लेके अभी आते हैं, पानी का है, अंदर साफ़ सफाई को लेके है, मतलब हर एक चीज़ को लेके
आपको क्या लगता है, आप कब से मतलब काफ़ी समय से यूज़ कर रही हैं शौचालय को, काफ़ी महिलाएं कर रही हैं, तो ऐसे में डिफरेंस क्या नज़र आया? पहले जो है लोटा लेकर दूर तक जाना, कभी मिलता नहीं था, कभी खुले में, लेकिन अब शौचालय बन गया है, चीज़ें कवर्ड है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? शौचालय होने से हम लोग को बहुत सुविधा है। शौचालय पहले नहीं था तो यहाँ वहाँ हम लोग को भटकना पड़ता था। अभी शौचालय होने से हम लोग को शौचालय में अच्छी सुविधा है, पानी है, सब कुछ है, हमको कोई बात का टेंशन नहीं। हम लोग हर बीमारी से बच गए। अभी शौचालय होना सबसे बड़ी बात है, हर घर में शौचालय होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंटी, आप शौचालय यूज़ करती हैं ये वाला? बराबर। साफ रहता है? साफ रहता है। और महिलाओं के लिए ज़रूरी भी होना चाहिए? जरूरी है ना, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये सब चीज़ के। गंदगी से तो बचा है मनाई, रोग बीमारी से तो खत्म है ये सब। सफाई रहता है। पहले आदमी लोग तो खाड़ी में जाते थे लोटा लेके, अभी बाथरूम बन गया है तो अभी सब लेडीज हो के चाहे जेंट्स हो के चाहे बच्चे सब बाथरूम में ही जाते हैं। इसके लिए बच्चे लोग भी खाड़ी में खेलते हैं तो उनको लोग लिए भी सर सफाई है, सुविधा है। पर पहले खाड़ी में जाते थे सब, अभी यहाँ पे बड़ा शौचालय बन गया है, साफ़ सुथरा रहता है, 2 टाइम धुलता है और सबको अच्छी सुविधा मिली है यहाँ पे शौचालय में। नहीं तो पहले सब खाड़ियों में जाके गंदा करते थे। जब से बाथरूम खुला है, पहले तो हम लोग खाड़ी में जाते थे, अभी इधर ही आते हैं। कभी रात को भी आ गया, रात को 1-2 बजे तो भी अंदर आदमी सोता है, चाबियाँ भी देता है, आराम से जा सकते हैं। और दिन में सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ सुथरा अच्छा रहता है। जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शौचालय बना है अपना मोदी जी के विकास में, तब से यहाँ के बच्चे बूढ़े सब लोग पहले खाड़ी में जाते थे और खाड़ी गंदगी रहती थी, लोग बैठने का रास्ता भी नहीं था। जब से भारतीय जनता का ये बाथरूम बना है तब से अपना खाड़ी में लोग 10 मिनट, शाम को आधा घंटा बैठ भी जाते हैं, रास्ता आने जाने का हो गया है। लोग पहले घूम के जाते थे, आज अभी लोग शॉर्टकट भी चले जाते हैं। वो दूसरे एरिया के भी लोग यहाँ पे आते हैं बाथरूम करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बाथरूम सबसे इस एरिया में सबसे बड़ी बाथरूम यहाँ पे बनी है। इतनी मुश्किल आती थी बाहर जाने में, सुबह सुबह ठंड। Alright, so Rishabh, it's interesting, particularly I'm going to point out to the 4th case study. This is taking place in Ghaziabad, and my colleague has been able to capture the toilets. The Snan Ghar, which is the area for bathing, and the toilets that have been separately built up. And what was also interesting to note was the name of the person under whom the toilet has been built, the money that has been granted, and it is the woman whose name has been put. So it is a matter of pride. Meka, it just comes down, and then what that report from literally a village which in Ghaziabad, okay, is pointing out to is just not okay. It's not one house, one example, right? So house after house after house, he went to 5 houses next to each other, and all of them had a bathing area and a toilet. Now it's fool's paradise to think that the problem is solved. Okay, done. Okay, of course not. The problem is not solved. But are we getting a sense of energy in covering a very basic necessity and a need that is life transformational? So have we isolated the problem that if we want to empower women, number one, we have to look after those who spend most of their day gathering water and those who have to spend most of their day figuring out how they'll go to the toilet. Can we sort these problems out before we start taking on the others? And the challenges of these are not over. For sure, of the 1 crore, 10 crore, whatever the figure of toilets finally comes down to, all of them will not be 100% okay. But you saw in the other case study which came, I think was it Bihar, the Gonda one, in which you're seeing that the relatives have got a toilet. Okay, now the other lady is saying, I also want a toilet. This is the kind of momentum you want to build. Yeah, absolutely. Ajay Kumar, it's a matter of pride. Initially, people would be skeptical. We can't have toilets inside our homes. What would the men think? It's not dignified. To now, transformation happening, like Rishabh mentioned, and in that case study, that majority of the people have toilets at their homes, and those who don't have it, they are envious. They are saying, we want the toilets as well, and that's a positive move. See, this is really very revolutionary thing. I think we are not able to gauge it and put it at the level it should be. It's like Namami Gange project has been listed as one of the 10 best environment friendly project by the United Nations. Let me share my experience from developed countries like Oman and Dubai. Even today, this thing is not there on agenda. And you say these Dubai and Oman and these countries are mostly covered by car journey. It's by road. There's no train, and either there is a flight. For flight, there's no problem. But rural to urban in Oman,
In Dubai, it's all by road. And the journeys are as long as 8 hours, 10 hours. Once the human flock starts from there, till they reach the destination, there is no such facility. And it is not on the agenda of the government yet. So India can play a role of a global leader. Even go with this example and tell these countries that we can help you to build these kind of facilities. And here is a case studies. We have done it in our country. We have proven. Yeah, there's a track record and a proven track record. Shibashish, get into the conversation. Now, you've yourself seen these case studies. 5 of them, there are, I think, about 12 to 15 people, 12 to 15 houses that have been covered. And they all have been positively talking about the transformation that has been brought forth in their lives. And how do you think this can be then, building block towards creating greater awareness, hygiene, health facilities, to education, to providing the job market, opening it up for women? Revolutionary step. Whether every toilet has been connected by water or not is a secondary issue which can be sorted out. Women can arrange a bucket of water to use toilet. So building a toilet with a proper septic tank is more important than having water connection to each and every toilet block. See, in India, the scalability is rule mature. So the number tells 11 crore toilet block in India constructed under the Swachh Bharat mission itself is a great figure and which has to be admired. Slowly people are getting educated and they know, they are aware of their health and hygiene problem. So these things will be definitely sorted out by the people, by village panchayat and local self-governments. Absolutely. This is a revolutionary step irrespective of other issues which can be sorted out by the household itself. Thank you. Absolutely. Tyra, quickly a last word from you before I wrap this up, and it's important. You've seen the ground reports, you've seen the case studies. Our reporters have gone to the interiors of these villages across the board, across the country. There are slum dwellings in cities as well. And like you said, this is the first step taken. There is success that has been witnessed. It's not the end all of the position that we are at, making India open, defecation free. There's phase 2. But there's some sense of accomplishment that we can see, that more and more people, more and more women, more and more villages and slum dwellers are coming together. They want this change because they see the transformation that has been brought forth in their lives. It's very heartening for me, at least, that Swachh Bharat has created awareness among the women. It's very important for security, safety, hygiene, and dignity of the women. So no doubt this has created awareness, and this is very important, and it's a basic need of the hour. But challenges are there, and we all together will face those challenges. All right, on that note, I conclude this conversation, but stay tuned on NewsX. It is episode number 3. It is the NewsX Vikas Report year-ender. As the year gone by 2022, we bring you a reminder. Stay tuned. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.